For centuries, the harsh, forbidding conditions of the remote northern areas of Pakistan kept progress at bay. That life could be different was a possibility as remote as the village they lived in. Then, like the warm sunshine that melts the snow and brings the mountains to life, education became available. In the beginning, money was scarce, and school was usually a level field under the sky, where the village boys sat on the ground and shared a few books. इस ज़माने में जो सहूलियात हैं, उस वक्त नहीं थे। हम नीचे फर्श पर बैठते थे, कभी कभार किसी दरख्त के नीचे बैठ के हम पढ़ते थे, कभी पत्थर के ऊपर बैठ के हम पढ़ते थे। उस ज़माने में गुर्बत थी, हालात बहुत कमज़ोर थे। हमारे घरेलू हालात नहीं बल्कि पूरे दरकुद की, बल्कि ये नॉर्दर्न एरिया की। तो इस तरह हम नंगे पाँव स्कूल जाते थे और किताबों की यही हालत थी। 2 बच्चों में 3 बच्चों में एक किताब होती थी। But still, the girls were left behind. Age-old customs, prejudice, ignorance, all formed barriers that kept women back, even as men moved forward. बच्चों को हम पढ़ाते थे, बच्चियाँ नहीं आती थी। वो ये कहते थे कि बच्ची तालीम करके क्या करेगी, वो घर का काम करे, रोटी पकाए, माल मवेशी का काम करे, जिम्मेदारी करे, आपने सब्जियों वगैरह का काम करे। Education for girls came with a great deal of personal sacrifice and social struggle. There was a boys' school near to our house. So in the morning, I used to go and see how do they conduct the assembly. I wanted to go and then study, but I couldn't go. Men have played a significant part in the development of women in the area. While many were at first resistant to female education, they are now playing a more positive role. बच्चियों को पढ़ाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग भी सोचते नहीं थे कि बच्चियों की पढ़ाई तो ये तो गुनाह तस्वर किया जाता था। टोटली उस वक्त हमारी कम्युनिटी में